Hi guys, my name is Vikram. I've started this channel with a view to connect with the people who listen to the same kind of music as I do. On this channel, I'm going to react and review some of the best music out there. And the first song that we're going to review today is called The Last Ride and is by a brilliant artist named Sidhu MooseWala. Let's get into the action. A film by Gurjant Panesar. You got to remember that name. And what a first scene. First scene में चिता जलाई हुई दिखा रहे. Let's go ahead. Yo, what's it? That car was actually a funeral ride where the body is taken to the crematorium or wherever it is going to ये जो इनका होता नहीं है burial ground. Let's go. This is Sidhu Moosewala. I can recognize his walk. चिता जल रही उसकी तरफ ही जा रहा है बंदा खुद ही वॉक करते हुए. Very important. Tell him where you're from, man. LA Fuel Good Service. The first bar itself is brilliant. उम्र दे हिसाब नाल दूना रुतबा मतलब उम्र के हिसाब से दुगना है इनका रुतबा. You know, he's being treated as a 50-year-old man who's seen the world while he's only 27, 28. Let's go ahead. So this is where he's saying that there's a reason why why the artist is walking way ahead of the world where the standard is. So let's go. So you got to understand that in Punjabi language, every word has multiple words, and you can never go by the straight, prima facie word that's being said. So here is saying Khwaja he doesn't mean it in a religious way. Khwaja means God primarily. Yes, there's one Khwaja in Ajmer, but it's not necessarily that. So brilliant lyrics. Let's go ahead. पिछले कर्मा का कोई धन नहीं लगता है मतलब इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि पिछले कर्मों का फल है ये तो और या फिर भगवान इस पे मेहरबान है Desert Eagle thinking So basically he's saying that he's had his own path and he's never really followed anybody. That's the path he's followed, his own path. दुनिया दे बने ने चैते बहुत नहीं दुनिया के बहुत चैते बने लाखों लोग but he's also saying that किसी अपने फायदे के लिए किसी के खुदा नहीं बने. We've just put out good music and we're receiving the blessings that we are. Let's go ahead. So basically saying that खुद नाल खुद दा खिता चकिया मतलब we've done everything all by ourselves. मैंने सब काम सारे अपने आप किए हैं and nobody's helped me out. Nobody handed me nothing, not even a flyer, as one of the people said. So and he's talking about that कि खुद से सब कुछ बना के जो मेरे को सक्सेस मिल रही है उसका नूर मेरे चेहरे पे दिख रहा है और ये बड़ी पुरानी कहावत है बंदे का जनाजा ना जवानी में उठ जाएगा. तो ये कहावत सच होती इनको फील हो रही है. It's picked up from the old Punjabi songs that were there about 30 to 40 years ago. They had some brilliant artists who were down to earth, but they had the best lyricism that one could get at that time. So let's go ahead.
ਆਓ ਕਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਪੈਣ ਰਿੰਕਲਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਤਰੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੋਊ ਪਰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ So he's saying that Gerade Mathe te pen wrinkla. You know, like they are getting frowns on their faces. उनके चेहरे पे शिकन आ जा रही है इसको देख के, you know. और बहुत लोगों ने बहुत जल्दी बहुत अच्छा सक्सेस पाया है पर हर कोई इतने आराम से महान नहीं होता, you know, महान नहीं बनते इतनी जल्दी जो इन्होंने कर दिखाया है. Let's go ahead. ਤਖਤਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਪਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਦਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਵਾਜਾਂ ਮਿੱਠੀਏ तख्ता जमाने का पलट हो गया. ये तो this should be very easy to understand कि दुनिया का हमने तख्ता पलट दिया है and बहुत आइयां you know आवाज़ा मिठी है from the world has given me accolades and the world has praised my work, you know. The दुनिया से आवाज़ें आई हैं मेरे को दुनिया भर से. ਚੋਬਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦਾ ਸਦਾਨੀਏ ਦਾ ਉਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਨਾਜਾ ਮਿੱਠੀਏ Man, in the middle of it all, let me tell you, the beat is so brilliant. It's got so many elements. It's just fantastic. It's packed to the brim. And this guy is such a, I would say, he is such a accomplished singer that at the age of 27, 28, when he's making this music, he's got the hold of the beat. He's owning the beat. You know, it's not the beat that's taking him there. Although it's a very basic West Coast style, you know, old Tupac, old Biggie style beat, and you might feel that you've heard it somewhere, but you haven't. And that's the beauty of it, that including old sounds with new technology and providing a voice on it that's got that rural Punjab touch to it, and that's what's so far what I feel is what separates him. He's got a brilliant taste. He's got a brilliant voice. Fantastic music, incredibly deep lyricism, and those are the things that are satisfying everybody, you know, all of the listeners. So just a guy who remembers only the 4 lines of the paragraph because it's being repeated, he will also love it. The music lover will love it. The Punjabi lyricism, you know, Punjabi lyricism in there is brilliant. So every lyricist who understands it will also love it. So it's basically got something for everyone. So let's go ahead with it. ਆਓ ਚੋਬਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦਾ ਸਦਾਨੀਏ ਦਾ ਉਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਨਾਜਾ ਮਿੱਠੀਏ भाई अगर ये LA के हैं तो ये चंडीगढ़ और पंजाब के गाड़ियों के नंबर क्यों हैं यहाँ पे? No, funny, but okay. Something we can ignore is a brilliant song. ਆਓ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਹੇਟ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਰ ਗਏ चौंधे चौंधे मर गए का मतलब आप समझ रहे हो कि जैसे कोई भगवान नहीं होता जिसकी जुस्तजू में आरजू में आप लगे हुए हो कि आपको भगवान के दर्शन चाहिए, आपको चाहिए कुछ, वो एक डिवाइन फैक्टर, उसमें आप चाहते चाहते आप मर जाते हो, यू नो. अदरवाइज मटेरियल थिंग्स तो आपको आज नहीं तो कल मिल ही जानी है, यू नो. तो बहुत आदि हेटा था वो हिस्सा बनने. The beauty of this Punjabi language is that they're using Hindi, Punjabi, English mix. बहुत आदि हेटा दुनिया ने उसको हेट दिया और वो कई लोगों की हेट का हिस्सा बना है, और कई लोग हैं जो उसको चाहते चाहते मर गए एज इफ ही इज सम सॉर्ट ऑफ, यू नो, डिवाइन कैरेक्टर. ठीक है, लेट्स गो. ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਬੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹਰਾਉਂਦੇ ਮਰ गए दुनिया में उसके झंडे घूम रहे हैं और उसके शहर में उसको हरौंदे मर गए, you know, like nobody is getting to defeat him at his work or otherwise. The guns and the money and the body language he has, that's what it says. They are not able to beat him at their game, at his game, at nobody's game, you know. Let's go ahead. See, that's what he's saying, that जित नालो ज्यादा जिदी हार बोल दी, जीत से ज्यादा जिसकी हार बोल रही है, एथोलाल तू अंदाजा मिठी है, यू नो. इधर से अंदाजा लगा लो कि जीत से ज्यादा उसकी हार बोल रही है. ब्रिलियंट. A lot of it,
this video has a lot of West Coast influence, wherein you're seeing these West Coast shoes. The music is West Coast. The kind of video it's surrounded. The whole thing. Although they're saying LA and but let's just go with it. ਆਉ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਉੱਥੇ ਕਰੂ ਸਜਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਣੇ ਬਿੱਲੋ ਪੈਰ ਜੱਟ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਜੁੜਦੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਰ ਜੱਟ ਦੇ So he's saying that you've seen people worship wherever my feet fall. कि मेरे चरण कमलों की तुमने देख लिया पूजा होते हुए. वड्डे घराणियां नाल बड़े बड़े जो फैमिलीज हैं उनके साथ मेरे अब नए रिश्ते बन रहे हैं और बड़े बड़े बंदों के साथ मेरे वैर भी हो रहे हैं at the same time. It's such a gangster thing to say because I'm getting associated with big families, but some really big shots are after me now. Predicament. ਦੱਸ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੇਚਦਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਝਾ ਮਿੱਠੀਏ So Malwa, Duaba ki hai, Majha Mithi hai. So these are the three blocks: Majha, Duaba, and Malwa. He's saying basically that his iski tour pure तीनों blocks के अंदर है. It's not just his area where he's killing it. Let's go. ਚੋਬਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਚਾ ਮਿੱਠੀਏ That was a Snoop. That's young Snoop Dogg, right? And look at the NWA, McRae, and that guy's Eazy-E. And then you have Ice Cube hidden behind there. Fantastic. This is what I was saying, that they've got that vibe. His music has that vibe, basically. ਚੋਬਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਚਾ ਮਿੱਠੀਏ Bandana type t-shirt. ਘਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀਪਾ ਚਲ ਘਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੱਗ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਜੀ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬਣਦੀ This is one of the best bars of the whole song. गिनती दे दिन ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਇੱਥੇ basically saying कि वो बंदा यहाँ पे गिनती के ही दिन जिएगा जिसकी सक्सेस उसकी खुद की दुश्मन बन जाएगी. मौत जिदे मोड़े ते काल लौंड बोलिया. Like Kal, of course, you understand death. Moda means shoulder. So Maut is sitting on his shoulder and he's singing. Bolia means, folk songs or something that brings joy to you. So basically, the devil is sitting on his shoulder and singing his songs, yeah. ਮਰਦ ਮਸ਼ੂਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੌਤ ਢੀਕਦਾ ਖੌੜੇ ਕਦੋਂ ਖੜਕਾਉ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਿੱਠੀਏ Mard mashuk wangu maut udigda. Mard, like his girlfriend, he's looking for death. He's calling her out. Udigda means calling her out. Kab aake wo darwaza khadkayegi. Brilliant. ਆਉ ਚੋਬਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਚਾ ਮਿੱਠੀਏ ਆਉ ਚੋਬਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਚਾ ਮਿੱਠੀਏ ਆਉ ਬੇਬਾਕ ਪੌੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਿੱਠੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਠੀ ਜੇ ਟੱਚ ਬੋਲਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਮੁੰਡਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਮੁੰਡਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ This was quite easy to understand. So quickly, let me tell you, just like the word Khwaja, the word load in Punjabi, it's got 3-4 different meanings. Here it means load to zyada munda sach bol raha hai. Here means कि अपनी औकात से बढ़ के बंदा सच बोल रहा है, अपनी हैसियत से बढ़ के. Again, some other words, some other meanings of it could be load नहीं लेदा, कि मतलब टेंशन मत लो. बंदे जो बहुत लोड है कि ये बंदा बहुत हैवी है, खतरनाक है. So many other meanings. So never take Punjabi lyricism on its face because it's got multiple different meanings, mostly. Moving on. That was Crip Walk right there. Sign of West Coast. ਆਉ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੰਗ ਨਾਮਾ ਫਿਰੇ ਲਿਖਦਾ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਸਲਮਾਂ ਤੇ ਹੀਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੰਗਨਾਮਾ ਫਿਰੇ ਲਿਖਦਾ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਬਾ ਤੇ ਹੀਰਾ ਲਿਖਿਆ.
साहिब और हीर की, दोनों की हीर रांझा टाइप की अलग अलग स्टोरीज हैं, ठीक है। और ये बंदा अपनी जिंदगी का जंगनामा लिख रहा है, which basically means every day is a battle in this long war that you call life. Moving on. ਜਿੱਦੀ ਨੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਨਾ ਖੜੋ ਅੰਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ये जो यहाँ पे ट्रांसलेशन इस वीडियो में करी हुई है ये थोड़ी अलग है. There's a slight bit different meaning that they portrayed, but what it basically means is जितनी तस्वीर मिलदी नखरो, मुल नखरो. Basically it means is the and अंत नु वेख के तस्वीरां बिकियां. Basically what it means is that जिस बंदे की तस्वीर कहीं नहीं होती थी, नो मोबाइल, नो पिक्चर, नो नथिंग, उस बंदे का अंत देख के, अंत उसका ऐसा हुआ कि दुनिया ने देखा, एंड उस बंदे का अंत देख के पीपल हैव स्टार्टेड पेइंग अटेंशन टू हिम. अंत देख के तस्वीरें विकियां, तस्वीरें बिक रही हैं, पोस्टर्स बिक रहे हैं, एंड दे पुटिंग इट इन कार्स, हाउसेस, ट्रक्स एंड शिट शैट. Now that's what it basically means. So let's go ahead with it. ਆਓ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਜੱਗ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਿੱਠੀਏ मूसेवाला जिंदे ही अमर हो गए. ये तो इट्स अंडरस्टूड कि जीते जी अमर हो गया. बहुत आइयां आवाजा, जग तो आवाजा मिठी है कि दुनिया हैव पुट हिम ऑन अ वेरी हाई पेडेस्टल. ਉਹ ਚੋਬਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦਾ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉੱਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਨਾਜਾ ਮਿੱਠੀਏ ਆਓ ਚੋਬਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦਾ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉੱਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਨਾਜਾ Brand new shoes. Look at this. This is all West Coast. You remember Still Dre? उस समय जो गाड़ियां थी in that video is the same guy. It's the same suspension cars. ये आगे गाड़ी चल रही है शोशेबाजी करते हुए. आपने अगर वीडियो में नोटिस किया हो तो ये आगे गाड़ी चल रही है, like is going like this अपने टोर में, और पीछे वो लास्ट राइड वाला व्हीकल चल रहा है. That's what you have to watch. These videos have such intricate little things that one has to observe कि भाई मौज बहारें चल रही हैं, बंदे की लास्ट राइड जा रही है, रोते रोते क्यों बितानी है? That's what they're showing here. He's celebrating it. I think that's it. Man, brilliant. Guys, this was fantastic and I just loved the music. The beat was brilliant. It was a fucking banger, as you call it. And the lyrics, the whole package. I mean, I'm sure, ये 100-200 मिलियन व्यूज जो बनते हैं ना, वो इसी कारण से बनते हैं जब आपके सारे तीनों चारों जो फैक्टर्स हैं वो सब टॉप ऑफ द लाइन हो. म्यूजिक, I think world level, brilliant, fantastic music. Lyricism, my God, I would say, like an avid listener, who's been listening to Eminem and Tupac and K-Dot and J. Cole and Jay-Z and all these guys for the longest time, I could say the lyricism of it was brilliant, like brilliant in a way that it got the perfect cadence. He was talking about Umr to Jada Rutba, Duna Rutba, and all the way till the last few lines, and then the scene of where they're using those fancy cars and his last ride is right there. So the sequencing of it, the cadence of it, and maintaining that whole thing, that's why they get such adorations, because he's on top of his art, I feel. Well, this has been the review for The Last Ride by Sidhu MooseWala. We've all had a great loss by his passing, but we're going to try and review and react to a lot of his music, and because the way this one sounded, it seems like I'm in a route for some really good music coming from this guy. So stay tuned for the next one, and hope you like this review. If there's anything, if there's any music, any song that you want reviewed, please do write it in the comments. If you like the video, if you like the detailed
explanation of the lyrics. Do give us a like and subscribe for more interesting videos coming your way. Thank you.